everyone. Today, this will be my first lecture, but before we get into discussing about what Indian economy is all about in your prelims and your mains, and how it is like writing answers and everything, which we will be doing eventually. Today, I would be dealing with basic economic terminologies, right? कुछ ऐसे terms वगैरह जो हम जब chapters में जाते हैं, students face lot of problem, especially those coming from non-commerce, non-economic background, ठीक है? तो वो कुछ terms लेके अभी शुरू के मेरे 3 से 4 lectures, I would be entirely focusing upon dealing with those terminologies, ताकि आपके terms काफी clear रहे, and when we get into the chapters, then it would not be a problem for you. Okay, so having this in mind, today's lecture has been framed. Okay, so let's start it. The topic for today is basic economy terminologies, which we would be needing when we are discussing our topics and the chapters. Okay, एकदम basic से आप start करते हैं. सबसे पहले हम assets versus liabilities के बारे में डिस्कशन करते हैं. जिनको पता है very good, और जिसको नहीं पता है for them it is important. So assets और liabilities, we hear this term lot of times. तो assets का मतलब है सिंपल भाषा में जब कोई आपके पॉकेट में पैसा रख रहा है, putting money in your pocket, simple. And liabilities mean taking money out. So in that aspect, आपको समझ में आ रहा है, asset is something positive, right? So asset means something which a business owns, जो business own करता है, and which provides it economic benefits, जिससे उसको benefits मिलेगा. Assets are something which provide you economic benefits. Economic मतलब होता है monetary. ठीक है? Anything related to money. Liabilities, on the other hand, is your financial obligations. Financial obligations to parties outside your business. तो ये जो asset और liability है, ये हम discuss कर रहे हैं in connection to a company or a business setup, जो भी आप बोलो, कि ये जो भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसके ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, राइट? बैलेंस शीट कंप्राइजेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है जहां पे आपके एसेट्स आर ऑन द लेफ्ट साइड एंड लायबिलिटीज आर ऑन द लेफ्ट राइट साइड. सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि एसेट्स होते क्या है. एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स, जैसे कि आपके इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स आर योर लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक योर मशीन्स, इक्विपमेंट्स, जो भी, एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हम बाद में करेंगे. एंड देन आर योर करंट एसेट्स. करंट एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन नेचर नहीं होते हैं. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर लिक्विड इन नेचर, और अदर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. लिक्विड का मतलब होता है कैश. हमेशा याद रखो, लिक्विड और लिक्विडिटी मींस दैट समथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, राइट? सो करंट एसेट्स का आपका एग्जांपल हो सकता है कैश, आई हैव सेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक, bonds, mutual funds, etc. So all these are your assets. And liabilities, on the other hand, as I said you, obligation है, आपको देना है. That means देना क्या रहता है? Loans. Debts are also loans. The other word for loans is debts. और भी example आपकी liability के है, bills payable, interest, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है? तो ये एक वेग आइडिया आपको रखना होगा एसेट्स और लायबिलिटीज को लेके. आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट मेकिंग अ बैलेंस शीट, बट जस्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट कंप्राइजेस एसेट्स एंड व्हाट involves your liabilities. Okay, I think till here it's clear. Let's proceed.
So we can sum up and say, as you all know and have seen, the assets give you benefits, they add equity to the company, and liabilities decrease your equity. So you can say if assets are greater than liability, that means financial health of the company is good. Financial health of the company is good. If A is greater than, okay. So ये एक आइडिया हो गया आप लोग को assets and liabilities का. Now let's go to the second topic. Okay, so let's continue. So the second term for today is capital. Capital का मतलब है amount needed to start a new business or a project. So this is the amount which is being used by the entrepreneur when he is starting his new setup or new startup जो भी है. So capital जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे हम we can come to another term, capitalism, right? तो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे that time we will be doing it in details, capitalism, socialism, mixed economy, all that. So capital से ही word capitalism आता है, and that मतलब जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, फंड्स कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए अगर जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड बोलते हैं. तो कैपिटलिज्म वही मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स का रोल होता है. तो कैपिटलिस्ट मार्केट वो होता है जहां पे द रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंडिविजुअल्स, और अदर यू कैन से द रिच क्लास, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट सेटअप. जैसे फॉर एग्जांपल सोशलिज्म में यू हैव मोर ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, इन अ मिक्स सेटअप यू हैव गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स, राइट. सो उससे आपको थोड़ा सा एक हेजी आइडिया मैंने दे दिया है दैट कैपिटलिज्म से हाउ वी कम टू दिस कैपिटलिज्म, कैपिटल से कैपिटलिज्म तक हम कैसे आते हैं, ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इक्विटी. इक्विटी का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय शेयरहोल्डर्स. मतलब किसी भी कंपनी में यू कैन से XYZ, उसमें अगर शेयर होल्डर ने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, बी इट ही हैज परचेज्ड शेयर्स ऑफ 10 lakhs, ठीक है, उसने 10 लाख के शेयर्स खरीदी उस कंपनी के, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है. मतलब उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, इन रिटर्न व्हाट दे आर गेटिंग, इन रिटर्न यू हैव टू गिव देम समथिंग, राइट. ओके, सो व्हाट यू गिव देम, first of all they have voting rights and definitely they get a portion of the profits, ठीक है, जो कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है. तो शेयर होल्डर के केस में we call them dividends, ठीक है. dividends is nothing but the profits which the company is making, ठीक है. और इक्विटी के साथ साथ हम डेट भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. देखो जो डेट होती है, डेट मीन्स व्हाट, when you are investing in a company, in return the company got to pay you interest, right? But equity shareholders में you are not paying them any interest, okay? In return you are actually, they are the owners of the company, you are giving them dividends, and they are playing a very active role in the company, right? So ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो गया है इक्विटी और डेट का, ठीक है. Now let's proceed to the next topic.
प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट है सारा, ठीक है, इनपुट कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग एनीथिंग विच इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ भी प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमी में when we'll be discussing the economics and types of economies and the problems of economics, right, what to produce, how to produce, all that when we'll be doing later, that time थोड़ा सा और clarity होगी। फिलहाल के लिए factors of production are the input cost जो भी किसी भी चीज के प्रोडक्शन में लगते हैं, ठीक है। These 4 factors of production are required to produce anything, be it anything, starting from your pen to your house to your building to your factory to your office, whatever things you see around you, जो भी प्रोडक्शन है उसमें ये 4 factors of production involved है, ठीक है। Number 1 is your land, number 2 is your labor, number 3 is your capital, and number 4 is your entrepreneurship. So these are the factors of production, और जो factors of production है आप जो यूज कर रहे हो factors of production, उसके अगेंस्ट आपको factor cost तो पे करना होगा ना। If you are using anyone's services, nothing is free of cost, right? तो जो factors of production के अगेंस्ट factor cost हमें पे करना पड़ता है। For land you are paying rent, for labor you are paying wages, or you can call them salaries, anything. For capital, we have discussed earlier, capital is the amount which is required to start a business. For capital, if you are taking loan from any bank, you got to pay interest in return. And entrepreneurship, obviously, when you are starting a business, आपका main aim क्या है? You are not starting business just for the sake of it, right? So main aim for any entrepreneur or any businessman is profit. तो ये achieve करने के लिए he has to pay these factor costs, and these factor costs lead to production. तो कोई भी सामान बनाना है उसके लिए ये factors of production required है। So अभी जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे आगे, factors of production will be using every now and then, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया that you know what are the factors of production. Let's proceed.